Okay. So last class में हमें planning देखले right. So we saw 5 year plans सब देखिଥିଲେ and planning ର need कौन and all those देखले. और किसी I think last नीति आयोग किसी रही so that we'll cover today. And then we'll see about the LPG. Right? हमें जो पढ़ी थी कि 91 में जो तुम्हारा liberalization, privatization, globalization ही थी so we'll study about that. So okay. So last year, last class हमें planning देखते So we saw कि planning कौन हो right? Why it is needed. तुम्हारा planned economic केम start है right? We saw the history of planning in India. Right? India तो start ହେଇଥିଲା like we discussed कि ସେତେବେଳେ partition ହେଇଥିଲା British rule ରୁ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ economic policies ଯୋଗୁ काफी ଆମର problems ଥିଲା socio economic बहुत inequality ଥିଲା ବହୁତ poverty ଥିଲା तो ଏଇ ଭଳିଆ situation ବି tackle କରିବା ପାଇଁ we need the government to intervene right that's why the planned economy and then yes our first prime minister Jawaharlal Nehru he was little bit से ଟିକେ tilted ଥିଲେ towards the socialist ଆମର USSR ର ଯୋଉ planned economy so that's how we started and our goal some ଦେଖିଥିଲେ କି ତମର economic growth ଦରକାର right modernization ହେଇଗଲା ତମର innovation କରିକି ତମର like latest technology use କରିବ तो मॉडर्नाइजेशन ହେଇଗଲା then self reliance we discussed कि तमरो किमिति हमरो जो हम बहुत सारे जो इंपोर्ट करछु ताको केन कमेबो राइट सो we can develop our industries and all to cut down the imports and all right so जैसे बेसी बेसी हमें हमरो इंडिया रे इंडिजिनियस गुड्स बनेबा जादरा कि हमरो लोकमन चाकरी पाइबे एम्प्लॉयमेंट मिलिबो हमरो इकोनॉमिक आउट ग्रोथ होबो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग फॉर जो दरकार तो किछि किछि जोडा हमें there is no substitute that we have to import but otherwise we'll try to ଆମର जो import basket ଅଛି ତାକୁ କମ କରିବାକୁ try କରିବା then social justice yes that is the main ଜିନିଷ ଯଦି government ରହିବ then ତାର ସବୁ policy ପଛରେ profit making will not be the intention right it will try to reduce inequality to reduce poverty ତାର aim ରହିବ then ଆମେ 5 year planning by history ଦେଖିଲେ first second କରି 12 plans ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ବେଶୀ details କହିବିନି ଆଉ I think achievements ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା I think last time discuss କରିଥିଲେ ଏଠି କହି ଦଉଛି ଖାଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ overall ଆମ କାଫି changes ଆସିଛି right we see our GDP ବହୁତ like growth ହେଇଛି right GDP ଆମେ almost like 8% ପହଞ୍ଚ ଯାଇଥିଲେ 2000 ଆମର 16 ବେଳେ right so 16 17 ବେଳେ ତମର almost ତମର 8% ଆଡେ ପହଞ୍ଚ ଯାଇଥିଲା ତ starting from ଗୋଟେ negative GDP growth where like we have reached ତମର GDP growth of 8% right so it was commendable तापरे हमर per capita income भी बहुत मात्रा में बढ़िची right and हमर import export बढ़िची हमर employment बढ़िची तो बहुत मात्रा में हमें like services sector रे we are number 1 right like तो बहुत जिंस रही हम टिके देखिवा खाली तो India became the हमर कहतली third largest economy in Asia right and seventh largest economy in the world in 2019 I think last class कहतलो अब fifth है right sixth or fifth so whatever fifth right so fifth largest economy so what 2.85 trillion economy and it's the fifth largest economy and PPP terms देखिबा third right I was telling you PPP terms माने कोन वर्तमान मोर इनकम जति की मो धर इनकम डॉलर रे कन्वर्ट कर दोची 5000 इंडिया रे हमर सांग अछि तार यूएस रे 5000 राइट मु ए 5000 रे आई कैन लीड लग्जरियस लाइफ मु रे ऑडी फॉडी किनी किनी मु पूरा 5 स्टार होटल खाइबी एंड ऑल बुली की चली परिबी किंतु ये सेम जिंस 5000 टका से डॉलर रे कर परिबोनी जे कॉस्ट ऑफ लिविंग अधिका राइट एक जदि मु गोटे बर्गर गोटे डॉलर रे खाइबी से $5 रे खाउथबो गोटे बर्गर राइट सो जदि हमें परचेसिंग पावर पैरिटी माने हमरो परचेसिंग पावर नहीं कि केते तो हमर इंडिया रो हिसाब रे परचेसिंग पावर टी अलग टी अधिक राइट करेंसीज सेम वैल्यू रे हम अधिक जिंस किनि परिबा सो इन दैट टर्म्स वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ताकू छाडी कि भी सी एमएमआर आईएमआर एगुडा भी सब तमरो लाइक रिड्यूस हेची लिटरेसी रेट बढ़ीची राइट
then industrial infrastructure भी strong ହେଇଛି, like we have all capital industries, consumer based industries, तो काफी industrial sector भी strong ହେଇଛି. Agriculture भी हमारा काफी strengthen ହେଇଛି. Then service sector तो like I was telling कि like we are like almost number one in the world, like we are the ସବୁଆଡେ like any big country देखी the capitalist country, so ତାଙ୍କର favorite destination ହେଲା India for offshore development center. India ତାଙ୍କର preferable, software ହଉ କି BPO ହଉ, they all open their centers in India, right? Because it's for them India ରେ cheap labor ମିଳୁଛି, ଶସ୍ତା, ଆଉ talented ଲୋକ ବି ମିଳୁଛନ୍ତି India ରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ easy. company ଦେଖିବ ତାଙ୍କର main office ଥିବ ୟୁରୋପ ରେ, right? but ତାଙ୍କର employee India ରେ ଅଧିକ ଥିବ. India ରେ ତାଙ୍କର development center will be bigger, right? Management control side thibo ki India tang office boda thibo, because they get cheap labor here, and plus easily भी ताको सस्ता भलो भलो ताको मिल जाती talent. तो service sector है देखो, we are like grown a lot, number one in the world. And education है गला, we see number of universities है गला, technical universities and all the central universities. So बहुत सारा achievements है planning जो हमरा ହେଇଛି, right? failures ଯଦି କହିବା, तो लास्ट क्लास ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ कि poverty भी ଏବେ ଅଛି, unemployment भी ଅଛି, quality of education दो number of schools वगैरह बढ़ीଯାଇଛି, but still the quality is not there, right? तम सेही teacher student ratio maintain होनी, कि सेतिकी teacher ମାନଙ୍କୁ training रे importance दिया जाउनी, right? So schools are there no doubt, but then still we need to ताको आउतर तार infrastructure को boost up करैला अछि, तम teacher को level को boost up करैला अछि. So there is a gap somewhere our training education रे भी अछि. Then gender inequality ହେଇଗଲା, R&D ରେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉନି, R&D ରେ ବେଶୀ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ଯାଉନି. This is today like in जोटा कि race of knowledge economy, right? ଏବେ it's a जमाना of knowledge economy, right? जोटे तमरा this innovation modernization एटा important, innovation is important if you want to win the race, right? तो ସେଇटे R&D ରେ तमते कम खर्च करिवो, then it will not help, right? तो R&D रे तमरा like percent of GDP तमरा बेसी खर्च करिया छै R&D रे. See, with the agriculture, with productivity, कम अच्छी. Like we talk about doubling the farmers' income, MSP and all, but still we need to go a lot, right? हमको farm productivity जेମିତି foreign ର अच्छी, ଗୋଟେ single farm रे per acre productivity बहुत अधिक अच्छी, ଆମର ସେଟା ନାହିଁ. तो that we need to achieve, right? तापर farm mechanization दरकार, बड़ बड़ farm size दरकार, whatever, but that still it is not achieved, right? And regional imbalance, right? तमरो still some states like Gujarat ହେଇଗଲା, तमरो your Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, and they are like leading, right? They have सबुतर number one वगैरह होचंदी. But तमरो UP, Bihar, Odisha, Northeast and all, so they are like somewhere laggards, right? And they are lagging behind. Simply like malnutrition, जो ଆମେ କହୁଛୁ shunting ହେଇଗଲା, ଆମର anemic ହେଇଗଲା काफी, ସେଇଟା ବି ଆମର malnutrition ଗୋଟେ major problem ରହୁଛି ଆମର. Okay, so and देखो एटा तो ओवरऑल ହେଇଗଲା, but major तो problem କହିବି. So the major problem of planning ହେଲା, ଆମର जो starting ଆମର ଗୋଟେ agriculture country ଥିଲା, right? more than 80% 90% ଆମର agriculture depend କରୁଥିଲେ, ବହୁତ କମ ଅଲଗା sectors ଥିଲେ. So ଆମେ କଣ କଲୁ ନା, agriculture ରୁ ଟିକେ industry ଆସିଲୁ, right? But then directly jump ମାରିଦେଲୁ services sector को. इंडस्ट्री वाज समवेयर एटा को इंपोर्टेंस दिया गला नहीं, ताको सेति बढ़ा गला नहीं, राइट? हम स्टेप बाय स्टेप जेबतला एग्रीकल्चर को डेवलप करियार थिला, देन इंडस्ट्री को डेवलप करियार थिला, देन सर्विसेज जाइथानो. दैट्स हाउ द अदर नेशंस वेंट, राइट? तांगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रॉपर हैला, डिफरेंट सेक्टर्स तांगर इंडस्ट्रीज डेवलप हैला, देन दे वेंट टू सर्विसेज सेक्टर. हमर कहला ना, हम वी somehow skip the industries sector को हम सेते ये कले नहीं, राइट? द प्रॉब्लम इज दैट एग्रीकल्चर भी एते प्रोडक्टिविटी नथिला, तो सर्विसेज सेक्टर कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इज लेस, ऐसे स्किल्ड लेबर दरकार, राइट? समस्ते जो पाठशाठ पढ़ना से सर्विस सेक्टर रे एब्जॉर्ब ही परिबेनी, राइट? दो द साइज ऑफ द कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी ऑफ सर्विस सेक्टर इज मोर, बट तार एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी इज लेस. एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर इज मोर, right? Now the problem happened like this, our economy तो बढ़ी गला, service sector expand करला, our economy बढ़ी गला, but we are not able to provide employment, right? सेति हम employment provide कर पानु, only the people those who are skilled and all, they are getting the benefit, right? Other people, they are not getting the benefit of service sector.
এইটা ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା, ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲୁ, ଆମର somehow the industry was neglected, right? And that's why ତମେ ଦେଖିବ ଏବେ ଯୋଉ different government ର initiative ରହୁଛି ତମର make in India वगैरह ଯାହା ବି, so it is to boost up the ତମର industry sector କୁ, ତାକୁ boost up କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, but ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର skip ହେଇଗଲା, right? That's the reason major ଗୋଟେ planning ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର demerit ରହିଗଲା, right? So because first year planning ରେ agriculture kale, then next year industries kale, but then somehow they lost the track, right? And then finally after LPG to basic service sector important hegala after the 1991, our 8th plan onwards service sector ko pura major ye gala, the industry was somehow that was neglected, right? So it are failures, right? Now we'll discuss about Niti Aayog. Any doubt till now? Is doubt? sir, sir, ଏଥିରେ main ରେ କେମିତି ମାନେ କଣ ଆସିବ? मेंस पर्सपेक्टिव डिस्कस करना, मेंस लंबा है जो आंसर टा, मेंस रे तो तमर पड़े, आई टेल यू द क्वेश्चंस, मेंस रे पड़े ओडिसा रे पड़े कि एलपीजी रिफॉर्म्स रे ओडिसा पर कोन इंपैक्ट, एलपीजी रिफॉर्म्स रो इंडिया रे इकोनॉमी पर कोन इंपैक्ट, तमर जो प्लानिंग रो इंडिया पर कोन इंपैक्ट, लाइक दैट, राइट? सो ऑल दिस पॉइंट्स वी कैन राइट, right? But तार जो नेगेटिव पार्ट हम कहू ना, नेगेटिव पार्ट देखे पड़े तो, सो इधर आंसर कौन लिखा हुआ है ना, सो वी हैव टू शो सेक्टर वाइज, एग्रीकल्चर रे व्हाट वाज द चेंज, एग्रीकल्चर रे बिफोर एलपीजी एति केति जीडीपी थिला, राइट? लाइसेंस राज थिला तमरो, कोन इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस राज, 1% जीडीपी ग्रोथ थिला, तमरो इंटरेस्ट रेट्स हाई थिला, व्हाटएवर यू हैव टू शो दोस थिंग्स, देन आफ्टर एलपीजी सेक्टर वाइज यू हैव टू शो ईच सेक्टर रे, एग्रीकल्चर सेक्टर रे केमिति हमर पूर्व कोन थिला, एबे केते ग्रोथ हेलानी, इंडस्ट्री केते थिला, एबे केते हेलानी, राइट? सिमिति सर्विस सेक्टर रे कोन, एंड इन द एंड वी हैव टू शो द गवर्नमेंट स्कीम्स, कोन कोन गवर्नमेंट की इनिशिएटिव नै चंती रिवाइव करिया पई, सो एग्रीकल्चर ए नि आइची, इंडस्ट्री ए नि आइची, दोस थिंग्स, राइट? दैट्स हाउ हमको आंसर लिखिया पड़ियो स्ट्रक्चर रे, राइट? बट एबे सेटा डिस्कस करबानी, वी विल गो इन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, राइट? मेंस पर्सपेक्टिव में आंसर राइटिंग कला रे देखियो एटा, ओके? Okay, sir. गुटे सेकंड, ओके? So देखो, during planning, right, we had a planning commission, 1951 planning start hala, land economy, so we had planning commission, right? So planning approach, right? So planning commission, it was top down approach thila, gote center decide karibo, so they will decide ki kon sector ko priority debe, kote kete budget allocation hobo, and accordingly it was forced, right? ए स्टेट को एतिके मिलिबो, राइट? दे हैड डिफरेंट कमिशंस, से कमिशन रिपोर्ट आनथिले कि को जगह रे केते इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अछि, केते माने पॉपुलेशन अछि, ता हिसाब रे ईच स्टेट को कहि देला को एतिके दबा, ताको सेतिके पैसा दियाबा, को डिवाइड हो, so it was forced. There was no discussion with the states कि कौन, there was a NDC, planning commission में NDC थिला, national development council ଗୋଟେ थिला, right? But it was more of a तार ଗୋଟେ ritual वाला role थिला, right? तार एमिति it's not like in that the discussion खाली होतला, से एथरे ना तमर सब स्टेट रो चीफ मिनिस्टर, तमर यूटी रो लेफ्टिनेंट गवर्नर एमसे आस्ट्रेलिया, right? But otherwise planning commission as a body, it didn't have any representation of the state. Planning commission jama representation nathila, it was a complete top down approach. AI jinso etikiti budget allocation hobo, it was forced, right? That was the problem with planning commission. Now that ame planning ru after like LPG and all, it was seen ki nahi planning ro eto fayda honi, right? Planning jogu auri inequality badi jauchi, so now we have to stop planning, right? Something dynamic हमको करिया पड़े, आउ प्लानिंग हबनी, ए जो ऊपर टॉप डाउन रहउची, राइट? वन साइज फिट्स ऑल हब नाही, राइट? ए गोटे साइज समस्त हे जिवो, गोटे नुस्खा सबडे काम करे ना, सबु जगह रे देयर इज
different requirement, there are different aspirations, ତାଙ୍କର different needs ଅଛି, different demands ଅଛି, ତାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବାନି କି ପୁରା all over India ସବୁ ଜାଗାରେ same ମାନେ ଆମ ଉପରୁ decide କରିବୁ, right? That's why they thought କି ନା କିଛି ଗୋଟେ bottom up ଆସିବ, there should be something different, and there should be something called ଆମର multi level planning. multi level planning କଣ, ତମର जो जहाँ problems ଅଛି, feedback ଅଛି, ସେଟା ତମର ତଳ ଲେଭେଲ ରୁ ଉପର ଲେଭେଲ କୁ ପାସ୍ ହେଇଯିବ, ରାଇଟ୍? ସପୋଜ ଫ୍ରମ ତମର PRI ଲେଭେଲ ରୁ ତମର ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲ ଉପରୁ ସେଣ୍ଟର, ତ ସମୟ ତମର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି, ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଅଛି, ତଳୁ ପାସ୍ ହେଇଯିବ। ଆକର୍ଡିଂଲି ତମର जो whatever inputs ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ जो policy framework ଦରକାର, ସେଟା ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିବ, right? ଏପଟୁ ତମର ଯାହା requirement ଯିବ, there will be feedback and all, and accordingly ତମର ଯାହା ବି inputs ଦରକାର, policy framework ଦରକାର, କି ତମର ଯାହା ବି ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ବି whatever ଦରକାର, all those inputs will come from top to down, right? So this was the approach with Niti Aayog, right? तो नीति आयोग रे एमिति नाही कि one size fits all नाही, there will be just 2015 पर हम अनाउंस कर देलु कि हमरा प्लानिंग कमिशन रहिबनी, once the 12th plan is done, will not like go onwards with planning, right? तो सेति में नीति आयोग आसिला 2015 रे। तो नीति आयोग was it is not like planning commission, so एटा कोन थिला मेजर, it was गुटे what you call गुटे तो प्रथम दी जिंस थिला, एथरे तमर सब स्टेट्स कर सब स्टेट्स को पार्टिसिपेशन थिबो, तो it is based on your cooperative federalism। काहे देखो सब स्टेट बसिबे, they will decide कि हमरो ए प्रॉब्लम एंड ऑल, they will discuss and accordingly तम डिसीजंस रे निया हो, तो it is based on cooperative federalism, right? हमरो state and center ला there will be cooperation, right? Things will move like that, so it is based on cooperative federalism, सब स्टेट्स को इन्वॉल्वमेंट रहबो। one more thing है ये गोटे तमरो जो पॉलिसी थिंक टैंक, राइट, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करे, राइट, कौन करे ना, ये इंटरनेशनल हो कि अलगा स्टेट हो जोड़े सक्सेसफुल ହେଇଛି, सपोज कर्नाटक रे समथिंग हैज सक्सीडेड, राइट? तो ये सही बेस्ट प्रैक्टिसेस पास करियो ओडिसा को कि देखो कर्नाटक रे एभले मॉडल अछि, तो एभले तमे करिवो, एजुकेशन सिस्टम तांकर देखो दे आर डूइंग गुड, दिस इज द वन। से सब जो लोअर स्टेट्स माने जो माने फॉलो करना, तांको देखियो दिस इज द, ई फोर्स करिवोनी, तो गोटे तांको पॉलिसी थिंक टैंक तांको पॉलिसी मेकिंग रे हेल्प करिवो, किसी तांको R&D सपोर्ट ला, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंडियन बेस्ट प्रैक्टिसेस, निजे भी तांकर डिफरेंट इनिशिएटिव्स रे से देखियो तमर हैकाथन वगैरह करोचंदी, राइट? तो नुआ इनोवेशन, नुआ टेक्नोलॉजी आनुचंदी, सो दैट दे विल ट्राई टू पास ऑन टू डिफरेंट स्टेट्स। तो गोटेला से पॉलिसी थिंक टैंक इनोवेशन हब वाला रोल करिवो, इनोवेशन हब पॉलिसी थिंक टैंक, आउट हला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नो वेयर द फोर्सिंग थिंग इज देयर, आउ कोerसन नाही, जबरदस्ती कोerसन नाही, दी जिंस गोटे तो हमरो जेहेतु लाइक वी आर ए लाइक कंट्री, राइट? तो डिफरेंट स्टेट्स हेले कोन हला, वी हैव अ स्ट्रांग सेंटर, तो this Niti Aayog provides a platform wherein there will be Prime Minister as the chairman, tomorrow then there will be CEO, there will be Vice Chairman, there will be some part-time members, some experts, some full-time members, union ministers, and all the states chief minister and union territory lieutenant governor. They will discuss on various topics, and after discussion and deliberations decide होगा कि चलो एटा हमें ए भले हमें करिवा, right? So there will be a 15-year what a roadmap रहिबो, there will be 15-year roadmap रहिबो, 7-year गोटे vision रहिबो, and 3-year गोटे तमरो action plan रहिबो, right? A 3-year action plan PTH. Okay, so 15-year long-term vision रहिबो, right? तो 15.5 केते 7.5, तो 7 धरिया हमें तो लोएस्ट राउंड अप कर दवा। 7-year तमरो गोटे दिस विल बी लॉन्ग टर्म रोड मैप, 7-year गोटे तमरो स्ट्रेटजी प्लान अछि, आ गोटे 3-year गोटे तमरो अगेन गोटे प्लान अछि, तो अगेन 7.5 वाला 3.5, तो 3 कर दियो, तो 15, 7 and 3, तो
এইଭଳିଆ ତିନିଟା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରୋଡ ମ୍ୟାପ ଅଛି, ଦେନ୍ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ଟର୍ମ ଗୋଟେ 7 year ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ଅଛି, ଦେନ୍ 3 year ଗୋଟେ ଇମିଡିଏଟ ପ୍ଲାନ ଅଛି, ରାଇଟ୍? ଦେ ହାଭ୍ ଡିଭାଇଡେଡ ଇନଟୁ 3 ନାଉ। 5 ବର୍ଷ ଯୋଉ ରିଜିଡ ପ୍ଲାନ ନାହିଁ, ରାଇଟ୍? they have a 3 year ଗୋଟେ immediate plan ଅଛି, ଗୋଟେ medium term 7 year plan ଅଛି, ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷର ଗୋଟେ long term road map ଅଛି. So this is how it works and it is based on cooperative federalism ଯୋଉଠି ସମସ୍ତେ participate କରିପାରିବେ. Now the uh, role of states is there, right? Earlier in planning commission states role is important ନଥିଲା, but then states have a say, right? And then it provides a policy framework, ଗୋଟେ innovation hub, innovation policy ଗୋଟେ assistance of states କୁ ଦବ, so best practices ଗୁଡାକ disseminate କରିବ. Okay, so it is somewhat like your NDC जो planning commission थिला, but NDC रो एते important role नथिला, right? NDC was more of a ritualistic role थिला, right? एते important नथिला, वर्तमान आर important role अछि. आ जो members देखिबा तमरो prime minister is the chairperson, right? Then there is a vice chairperson, right? There is a CEO. There are some full-time members, कम full-time members अछंती, बेसी नांती. Planning commission अधिक थिले, कम अछंती. Then there are some part-time members. Part-time members, there will be some experts from some leading universities, research organization, experts थिबे एटे, जोडा कि पूर्वरु planning commission एते experts नथिले, एटे experts अछंती, right? Full-time members कम अछंती. Ex officio chairman किए, ये तमरो different union council of ministers, prime minister तको choose करिवे. Our finance minister हे गले, तमरो external ministers हे गले, like some of them home minister, they will be ex officio chairman of the your Niti Aayog. Special invitees किछि रहिबे, like there can be some regional councils as well, ताको भी invitation as परिबो, right? So this is your membership तांकर. Au governing council की रहिबो, governing council you can see हम सब states को chief minister and lieutenant governor of the union territories अछंती, right? So this is the composition and तांकर जो कहउथिली, apart from your ଗୋଟେ policy guidance, policy making तो कहबनी, policy बनन, policy ଗୋଟେ guidance को दउछन, तांको best practices दउछन, guidance दउछन, तांको different technical support दउछन, तो all those things. तो जोड़ा कहउथिला तांकर ना ଗୋଟେ दीटा हब अछि, ଗୋଟେ टीम इंडिया हब आ ଗୋଟେ knowledge and innovation hub, right? तो टीम इंडिया हब काम कोन, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फैलेबो, सब स्टेट्स में तमरो इंटरेक्शन करिकरी तमरो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एनकरेज करिवो. एंड द नॉलेज इनोवेशन हब कम करिवो, बेस्ट प्रैक्टिसेस इनोवेशन सेगुडा सब माने ताकू बेसी प्रोत्साहन करिवो, ताकू आनिकरी डिसेमिनेट करिवो, राइट? सो दिस इज योर नीति आयोग. एनी डाउट इन दिस नीति आयोग रे? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस डाउट की? एनी डाउट इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? क्लियर ना मोर लेस? मेंस रे तमरो प्रति वर्ष क्वेश्चन टा आसे, नीति आयोग टा तमरो प्रति वर्ष पचरंती ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर केमिति, राइट? तो बहुत सिंपल, एते किछ कॉम्प्लेक्स नहीं. हमर प्लानिंग कमिशन रे जो थिला, इट वाज टॉप डाउन, राइट? ऊपर जहां क्वेश्चन एटा कहते बेटा कर तो कर, राइट? स्टेट मान रोल एते इंपोर्टेंट नहीं, इनोवेशन वगैरह एते सब बेस्ट प्रैक्टिस ए सब धंदा नथिला, राइट? ऊपर हम डिसाइड करले व्हाटएवर कम्स, सबुडा स्टेट कहते बेटा कर, तुम पैसा भी से हिसाब रे बांटा हिजिवो. आर काम कोन, नीति आयोग रो बॉटम अप रहइबो, तळु आसीबो, प्रॉब्लम्स रा जीवो ऊपर को, ता अनुसार देयर विल बी इन लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट्स in the Niti Aayog governing council. Then there is experts asibe, there will be innovation ଗୋଟେ team India hub जे cooperative federalism माने promote करिवो, ଗୋଟେ innovation hub जे कि तमरा best practices हेगला abroad रे कोन अछि, different states रे कोन अछि, ताकू disseminate करिवो, force करिवो, disseminate करिवो कि देखो ओडिसा रे कहबो कि नवीन पटनायक को सुनो एमिति कर्नाटक रे they are doing good in education, this is the thing they are following, तो तुम एटा follow कर परिवो, if you need any help our details आनी तुम देबे, right? Kerala रे बेस्ट प्रैक्टिसेस. सो तमरे तांगर इंडस्ट्री रे तमरो एटा जो महाराष्ट्र रे बेस्ट प्रैक्टिसेस तांगर इंडस्ट्रियल सेक्टर रे कि कोऑपरेटिव सेक्टर रे तांगर एटा बेस्ट प्रैक्टिस अछि. तो एई भलिया तमरो कोएशन करिवनी, बट तांको गोटे सपोर्ट दबो बेस्ट प्रैक्टिसेस बारे जाने पे, राइट? देन इफ दे वांट एनी हैंड होल्डिंग, कहबे माने हैंड होल्डिंग देबे, राइट? दे विल सेंड द एक्सपर्ट्स एंड ऑल. सो ए दीटा काम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट करिवो एंड तमरो बेस्ट प्रैक्टिसेस इनोवेशन सबोडे प्रमोट करिवो, राइट? एम्स वगैरह एता पढिबानी सेम जिंस, राइट? हमें एते ये पढिबानी हो, एगुडा भी एते डिस्कस करिबानी, लाइक डू यू वांट टू डिस्कस और आई विल गो फॉरवर्ड?
हम जल्दी जल्दी करिया एते डिस्कस करूनी राइट बुझिला नीति आयोग रो यही थिबो तुम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से बढ़ेबे इनोवेशन करेबे राइट तांगर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से यही थिबो से एंड तांगर डिफरेंस प्लानिंग कमिशन एंड नीति आयोग रो कहली कि नीति आयोग इज बॉटम अप एटा टॉप डाउन एथरे तमरो उ जाहा कहउतिली स्टेट रोल थिबो एथरे स्टेट रोल तो इंपोर्टेंट नहीं तमरो एथरे प्लानिंग कमिशन बजेट एलोकेशन होतला आर बजेट एलोकेशन जमार रोल नहीं देयर इज नो रोल इन बजेट एलोकेशन एट ऑल राइट प्लानिंग कमिशन फोर्स करतिले के एनफोर्स करते एटा करो एथरे इट विल मोर ऑफ एडवाइजरी रोल इट विल नॉट फोर्स एनीथिंग राइट देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी डिफरेंट आर एक्सपर्ट्स कम थिबे सॉरी एक्सपर्ट्स अधिक थिबे आर एक्सपर्ट्स एते सिस्टम नथला एक्सपर्ट्स आसियार आर फुल टाइम मेंबर्स अधिक थिबे आर फुल टाइम मेंबर्स कम राइट देन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रे भी हम देखले स्टेट्स अछन एंड ऑल ए भले तमरो differences and all right detail dame ho jibani okay now we look into LPG reforms right any doubt in the first planning upare kichh doubt ki planning ame padle kichh doubt ki hetre any doubt in the planning prelims ro question kemiti asibo planning ro tamara overall planning jaha tum dekhli definition but most chances hela tamara it will ask planning ro co planning ro kon na right ତମର କୋଉଟା ମହାଲନୋବିସ ମଡେଲ ଟା କୋଉଟା ତମର हरोदामर मॉडल कोटा हरोदामर कोटा गडगिल योजना कोटा गरीबी हटाओ कार ये थिला 12th प्लानिंग रे कोन कोन एम्स थिला राइट व्हाट इज द टैगलाइन राइट जोडा हम कहू फास्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ राइट टैगलाइन कार थिला 12th प्लान की को प्लान थिला ऑब्जेक्टिव्स कोन गरीबी हटाओ कोथरा थिला कोथरा तमरा आईआरडीपी लॉन्च हेतिला दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स ओके जेहेतु हमें मल्टीपल चॉइस आसी देयर विल बी 2 3 सेही प्लान चैप्टर दी तीनटा आसीयो प्लानिंग दा कोन किछि कांसेप्ट बेस आसीबो कि प्लानिंग काइंगे आसला कोन आसला एंड ऑल को ईयर स्टार्ट हेतला कि फैक्चुअल आसीबो किछि एई प्लान 12 फाइबर प्लानिंग स्टेटमेंट आसीबो गुटे क्वेश्चन ने मल्टीपल एरिया टच कर दो प्लानिंग रो राइट किछि गोटे कांसेप्ट वाइज टच कर दो किछि गोटे फैक्ट वाइज टच कर दो किछि 5 ईयर प्लानिंग बाटा टच कर दो एबिला करी चार पांचटा स्टेटमेंट पड़ी पड़ परिबो राइट प्लानिंग रो एबिला क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम एंड ऐसे ही मोस्टली एग्जाम से काफी फेवरेट क्वेश्चन ऐसे ही प्लानिंग में कुछ नहीं ओके देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स राइट सो हम ऑलरेडी देखिले कि तम 1991 रे केमिति इंडिया ଗୋଟେ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस रे फसी जाइथिला राइट सो देयर वाज योर फॉरेन रिजर्व्स राइट फॉरेक्स रिजर्व्स वाज like around less than $1 billion and it was not sufficient even to drive 2 weeks of import and that is a very precarious situation to be in right कि जे तुमे दी सप्ताह रा खेल तपर तेल माने जो इंपोर्ट माने अधिक तेल ही जोडा हमर मेन प्रॉब्लम अच्छा भाई ता पर जदि हम तेल आउ किनी परिबानी तेल तो द इकोनॉमी विल कम टू ए ग्राइंडिंग हॉल्ट राइट कोन करियो ता पर इकोनॉमी पूरा दरदाम बढ़ी पूरा इकोनॉमी हॉल्ट रे पळे आसीबो यदि पैसा नै तो एई वाला सिचुएशन आसीला तमरो 1991 राइट तार डिफरेंट रीजंस भी हम देखिबा गुरतो प्रॉब्लम चली आस्थिला ऑलरेडी तमरो 7th प्लान रो बहुत सारा खर्च होई जाइथिला तमरो तो बहुत सारा बोरोइंग हेगिरी डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत जगह बहुत सारा हे जाइथिला एंड ऑलरेडी सिचुएशन खराब थिला 7th प्लानिंग ऑनवर्ड्स 8th प्लान आउडी खराब सिचुएशन हेगला तो इराक युद्ध हला ऑयल प्राइसेस बढ़ी गला and because of that ne tom situation auri kharab he gala and they didn't have forex tomro jo even say to ase remittances sede bond he gala middle east remittance bahut ase remittance bond he gala yade juddha puto eno to situation bahut kharab he gala di week ro bi au paisa nathila tomro telo kiniya pai right imports mane telo kiniya paisa nathila and that was a very bad situation तो सही सिचुएशन जाइगरी इंडिया आईएमएफ को जेमिति पाकिस्तान जाउची इंडिया से जाइगी माकिला तमरो कि हमको दियो टंका दियो राइट टंका दियो तो आईएमएफ ता कहला कि भाई तू फर्स्ट काम कर जो हीरो होचू कहचू कि नाही आमे ओपन अप हबुनु जो लाइसेंस रा तम ट्रेड रे तम रेस्ट्रिक्शंस कि बाहर आसिकरी इन्वेस्ट करिया को रेस्ट्रिक्शंस फर्स्ट तो तोर इकोनॉमी को ओपन कर इकोनॉमी ओपन करिवु सेतले तू मते पे ऑफ करिया कैपेसिटी तो रहइबो अदरवाइज तू आज 2 वर्ष पर फुल मागिबू राइट फर्स्ट थिंग तो या कर तू इकोनॉमी को ओपन कर इकोनॉमी को ओपन करिवु बाहर एफडीआई आसीबो
India development habo, employment badibo, economic growth badibo, then you will not come to this situation again, right? Ebe to paisa nei kri phone jodi jimi chalchi simi chalebo tame, nothing will happen, right? Tamaro industrial sector, tamaro that license raj, tamaro khali public sector ro importance, public sector ya loss making ଅଛି public sector, ତାକୁ ତମେ ଜବରଦସ୍ତି ଫୋର୍ସ କରୁଛ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର, ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର କୁ ତମେ ଜମାରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉନ, ଫରେନର୍ସ एफडीआई वगैरह କିଛି अलाउड ନାହିଁ, राइट? अलाउ करने एते रेस्ट्रिक्शन की ना के बराबर, राइट? एई वाला सिचुएशन रे तमे एइदा टेम्पररी खाली पैसा नहीं बंची जे बट लाभ होबनी। फर्स्ट आई विल गिव यू द मनी बट विथ अ प्रॉमिस दैट यू विल do structural changes in the economy, that's how your economic reforms or LPG reforms आस्थिला, right? तो ठीक है दादा देखि दवा, so the economic reforms which changed the path of the economy that country witnessed in later years were LPG reforms, right? तो गोटे watershed movement थिला, गोटे complete change हेतिला हमर approach रे, right? After this we will see तमरो the globalization era आसीजिबो पूरा हमर outside contacts पूरा open up हेजिबो, private sector को बहुत important role दिया जिबो हमर economy रे, right? पूर्व कोन था, it was a mixed economy but major role was with public sector, right? But after LPG what happened, it is still a mixed economy but major role is with the private sector, right? Public sector किछि किछि critical sector ये रे अछंती, बाकी सब बड़े private sector पसे छंती, right? Now the major growth role का रच private sector हाथ रे, तो 1991 पर गोटे बहुत बड़ चेंज हला, right? Still a mixed economy but the orientation has changed to private sector, but पूर्व mixed economy थिला but public sector orientation थिला, right? So बहुत बड़ा change थिला. Even after that बहुत जो globalization, all the sectors were opened, तुम्हारा FDI वगैरह, FII, FDI, हमारा import export, everything was changed, right? तो देखिबा, तो in 1981 ने तुम्हारा जो हमारा मनमोहन सिंह थिले हमर पीवी नरसिंह राव थिले प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह थिले हमर फाइनेंस मिनिस्टर, तांका अंडर आको राव मनमोहन रिफॉर्म्स सिकुंती। एंड फैक्टर्स देखतबा कोन फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द राइज इन प्राइसेस, राइट? तो इन्फ्लेशन काफी बढ़ी हेतिला ए टाइम रे, यू कैन सी अराउंड तमरो 17% तमरो इन्फ्लेशन हे जाइतिला। फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी हम कहउतली 7th प्लान ऑनवर्ड्स ये तम डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत सारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ी हेतिला, राइट? तो यू कैन सी इतने बढ़ी हेतिले, लोन वोन नहीं थिले, इंटरेस्ट देखो 36.4% of your GDP is going for interest payment, is a huge, right? And development खर्च कोन हबो, खर्च को डेवलपमेंट हबो कोन, तमे ग्रोथ करेबो कोन, इंडस्ट्रीज करिवो, इतने बेसी तमे लोन नै कि तमे तमे जहां भी गरीबी हटाओ खर्च कि जहां भी खर्च तमे कि 36% तमरो जाउची जति कि तमरो टैक्स तमरो जीडीपी रो, इट इज गोइंग फॉर interest payment only. It's a huge amount, right? So rise in fiscal deficit है, adverse balance of payment crisis, I was telling you कि काफी forex reserve बहुत कम थिला, 3 week रो मात्र थिला पैसा कि तमरो से फाइनेंस कर परि इंपोर्ट्स को, राइट? Then Iraq war, right? Iraq war जो तुम्हारा remittances बंद हो गला, तुम्हारा तेल price बढ़ी गला, dismal performance of the PSUs. Yes, PSUs were like the sick industries, they were not doing good, not at all competitive, पूरा lethargy mode में चलते ला, and they were loss making, all of them were loss making, right? Bearing a few. Fall in the तुम्हारा foreign reserves, right? I was telling you तुम्हारा the forex reserve, it was barely to meet 2 weeks of import तुम्हारा थिला. So these were all the reasons. You can see inflation, you can see Iraq war जो remittance बंद है इतला तंगरा, right? Remittance would important source of income थिला, right? We are the highest remittance, right? So remittances we are the highest, right, in the world. So remittances बंद है इतला, तेल price बढ़ी गला, inflation थिला, तमर याडे forex reserve में पैसा न थिला, lot of fiscal deficit. So all these situations finally led to your balance of payment crisis, right? Balance of payment con and all. For now, if you don't know, don't bother. We will see while studying the external sector that we will study about balance of payment crisis, right? So just remember कि our forex reserve dollar, right? Foreign currencies,
and we have to maintain certain forex reserve दरकार, right? नहले हमें किमिति जाकरी हमें forex reserve पैसा नथिबो, how we will pay this import and all, हम जहाँ import वगैरह होची किमिति दबा, तो forex reserve पे strong forex reserve is required, right? तो एई टाइम रे कम हेतला ना forex reserve तमर खाली हे जेतला, एते कम देला कि 2 वीक रे मात्र पैसा तमर रहिबो, तो एई बडा सिचुएशन रे तो we saw the good balance of payment crisis आस्तेला, तो that will discuss कि तारा concept टा कौन balance of payment, we'll discuss later, okay? So any doubt on this? Then we'll see कि कौन exactly reforms आसिथिला, we'll see that. Any doubt? Okay. So the first step was liberalization. Liberalization माने कौन? तो देखो आ पूर्व ना बहुत बेसी तमर लाइसेंस राज तमर इंस्पेक्टर राज सिस्टम थिला, माने कोन ए 10 तर छापा मारिबे आसी गिरी, अरे तमर ए टैक्स देनो ये करनो, तम इन पॉल्यूशन नॉर्म्स भागुछ फाइन, राइट? तम एबुला तम अनट्रीटेड स्वेज डिस्पोज करछ फाइन, राइट? कथा कथा तमे ती परमिशन नो एक्स्ट्रा ये कर देलो से कथा फाइन, तमर लाइसेंस राज तमर ओडे नुवा इंडस्ट्री स्टार्ट करिया पे 10 जगह रे बुल्लो, लैंड पे बुलो, इलेक्ट्रिसिटी पे बुलो, पानी कनेक्शन पे बुलो, यही अप्रूवल नो में बुलो, से अप्रूवल नो बुलो, ease of doing business was not there at all, right? एलो सिचुएशन रे की ओडे एनकरेज हबो कि नुआ ओडे बिजनेस का स्टार्ट करिया पे nobody will like look for it, right? की करिवो भाई मु ओपन करिवि यार लासी लांच मागुते 10 जण आसीगिरी, तो प्रथम तो मो चुट्टी पूरा छिड़े देबे नुआ खोलिया पे, राइट? पूरा एटा दरकार सेटा दरकार, ए बहुत सारा क्राइटेरिया कहबे. Once that is done, then tomorrow license tomorrow sorry license मिलियला पर tomorrow 10 थर जासी छापा मारिबे, situation nobody will want, right? And बहुत सारा सेक्टर रे तुम प्राइवेट सेक्टर पसिया दोनो थिले, right? All the those was only for public sector, बहुत सारा सेक्टर रे तुम प्राइवेट सेक्टर पसिया दोनो थिले, so this was a system. But एबे कोन गले liberalize कर देले, economy was liberalized. Now ease of doing business आसीला, आउ तमरो एते लाइसेंस राज नहीं. Now license was distributed, many sectors like were opened except your defense and atomic energy and railways, defense, railways and atomic energy, ए तीनटा छाड़ी करी बाकी सब सेक्टर को अलाउ कर देले तमरो फॉर प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर देले पसिया पे, राइट? तो ओपन अप कर देले तमरो प्राइवेट प्लेयर्स मन पे. देन तमरो ए सब जो लाइसेंस राज वाला इंस्पेक्टर राज सब बंद कर देले, right? So those things were not there, harass करेगो नथिला, right? So even आमे भी देखो जो it is an ongoing process. एबे देखो तुम corporate tax को कमाउछंती, right? जो हमरो minimum जो alternate tax अछि, जो नुआ नुआ कंपनी जरा प्रॉफिट एत नथिबो, तो we see देखो this concept of reducing the corporate tax and all, right, coming up. काहे this was kind of तुमरो encourage करिया पे कि आउरी हमरो like sector नुआ नुआ कंपनीज खोलु, नुआ नुआ इंडस्ट्रीज खोलु, right? So this is how liberalization तमरा आस्तेला 91 रे, right? So टिके देखि दबा, economic liberalization refers to a situation where unnecessary restrictions and controls are removed from a country's economy to ensure that the business and enterprise can maximize their contribution, right? Unnecessary restrictions tila license rights, inspector rights उठे देले. However, it is important to note that liberalization does not mean an uncontrolled economy, right? कि चीज तो कंट्रोल रही वही, there will be your CCI, right? Competition Control of India it is Roy, but it was not like previously harassing nothing. Then Indian economy was liberalized in the year 1991. In India, the concept of economic liberalization was introduced to attain several objectives. Industrialization, yes, either doing business as one private players has been one like sectors growth over. Expansion in the role of private players, yes. Foreign investment body, introducing a free market system, right? Even FDI, FII we allow कराएगी, right? We saw that automatic route 100% our automatic route allowed अच्छी, right? So our this FDI and all, right? FDI देखो दीड advantage that करतो पैसा आसियो plus technology आसियो, right? दादरा employment वगैरह सब बहुत जिनिस आसियो. So we have got this automatic route कोटे and then FDI रे जोड़े की बहुत सारा sectors रे without approval and all, and बहुत least तमरा approvals रे तमरा 100% तमे like तमे FDI रे तमे involve कर परियो बहुत सारा sectors इन दो अच्छे, right? किसी की sectors रे
which is the amount ପରେ we have that approval and all ଅଛି, otherwise 100% ଆମର automatic route ରେ ଅଛି below some amount and certain sectors ରେ critical sectors ରେ allowed ନାହିଁ still now, so ଅଲଗା sectors ରେ 100% ବହୁତ ସାରା sectors ରେ 100% allowed ଅଛି automatic route ରେ, right? so this ଦେଖ ଏବେ even foreign ତମର investment allow କରିଦେଲେ, ତମର private players କୁ economy ରେ ବହୁତ ସାରା sectors ଦେଇଦେଲେ, right? so this is how it was liberalized. The restrictions were relaxed for a private players to enter several core industries which are previously reserved for the public sectors. Okay, so this is your liberalization. Liberalization ने कौन हला in short कोई भी यदि पूर्व जो license राज inspector राज चलतिला public sector करा जो दबदबा थिला ताको बंद कर देले, private players से open कर देले except few critical sectors like railways, atomic energy and defense, बाकी सबड़ा को open up कर देले, फॉरेन पैसा जो एफडीए वगैरह एफआई ऐसे ओपन अप कर देले, राइट? आ द्वारा तमरा जल्दी जल्दी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हबो एंड प्रॉफिटेबल हबो, राइट? ग्रोथ रहबो. ऑब्जेक्टिव्स कोन थिला टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, राइट? तो विल सी तमरा विद द एफडीआई कमिंग एंड ऑल तमरा कैपिटल अकाउंट विल बी सरप्लस जादर के तमरा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमें prevent कर दो, right? This will actually happen, right? After LPG will not face balance of payment crisis ever again, right? Because our capital account is always surplus, right? तो FDI तमरे foreign direct investment increase करिया पई तमरा even private companies and MNCs को प्रोत्साहन करिया दवा पई, right? To usher globalization for the Indian economy and regulate import and export and promote foreign trade, right? So open up कर देलो हमारे इंडिया इकोनॉमी, import export like everything, so हमें open up कर देलो, we are no more a closed economy, right? So this was the thing. Okay, so overall टिकट कॉल जो दिया already we discussed कौन LPG रे से मैंने liberalization ने कौन कर ले, deregulation of the industrial sector, right? खाली critical तमारा railways, defense and तमारा atomic energy छाड़ी के बाकी सबड़ा को open up कर देले, आउ तमारा कोटा रहिलानी तमरो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, ए सेक्टर रे खाली पब्लिक सेक्टर कोटा दैट वाज रिमूव्ड. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो ताको लोन दबा, राइट? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कि नुआ इंडस्ट्रीज खोले पे लोन दबा, ताको क्रेडिट दबा, इंश्योरेंस प्रोवाइड करिवा, राइट? ऑल दिस वाज लिबरलाइज्ड, राइट? काफी प्राइवेट प्लेयर्स भी आसी गले, राइट? आ पूर्व ना काफी तमरो प्राइवेट बैंक से आसनो थिले, बट आफ्टर योर LPG reforms, we'll see a lot of new private banks coming up, right? तो बहुत सारा easy कर देले कि नुआ banks आसीगला, नुआ insurance companies आसीगला, नुआ NBFCs आसीगला. Now they provided your financial support to the like these industries को. Tax reforms I was talking to you about the minimum corporate tax जो थिला, corporate tax को liberalize कर देले, GST आसीगला परे we'll see, right? तो बहुत बेसी हमारा even tax reforms भी आस्थिला, right? To make it माने टैक्स रिफॉर्म्स एमिति कहले कि हारासिंग रहइबनी, पूर्व जो हारास करतले हारासिंग रहइबनी, इट विल बी माने जी जारो इनकम हिसाब रे पे करबो, इट विल बी वेरी मच लॉजिकल, हारासिंग रहइबनी. फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स विल सी कि तमरा फेरारु फेमा आसीगला, राइट? जो इजी कन्वर्टिबिलिटी कर देले से माने, राइट? ए जिंसना टिके बुझी परिबनी, मु एटा परे डिस्कस करिवि, राइट? पूर्वरु तमरा जो फॉरेन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्टिव एक्ट रु फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पड़े आसिला, राइट? सो वर्तमान कने तमे केते टका फॉरेन इन्वेस्ट कर परिबो, फॉरेनर गोटे आसी इंडिया रे केते टका एक्सचेंज कर परिबो. मु आसिली वर्तमान धरो मु अमेरिका रे आसिली पूरा $1 बिलियन आसी एक्सचेंज कर देली, का अलाउ करियो कि करियो ना? कले हठात कोन हबो कि मु आसी कर देली पूरा मु माने काफी बेसी जो पैसा माने फॉरेक्स रे बढ़ी गला, मु हठात आसी पैसा बाहर गली, मु $1 बिलियन नै कि पळेली, अरे फॉरेक्स जो हम कमी गला, राइट? तो ए वाला सिचुएशन सब हे परिबो. इंस्टेंट लिक्विडिटी भी मार्केट रे पळे आसला, मु $1 बिलियन को कन्वर्ट कर देली एंड मार्केट रे पुश कर देली लिक्विडिटी, राइट? तो लिक्विडिटी बढ़ी गला, तो ए वाला ना हठात दिन अलाउ करी होबनी, राइट? सो पूर्वरु गोटे थिला फेरा, ए जो तमरो फॉरेन एक्सचेंज जहां करेंसी एक्सचेंज को मैनेजमेंट करिया पे देयर वाज ए फेरा, राइट? तार काफी रेस्ट्रिक्टिव थिला सेटा, ये एति टका अधिक नै परिबोनी, एजुकेशन पय हेले एति की तमरो मेडिकल पय हेले एति की, राइट? बहुत रेस्ट्रिक्टिव थिला सेटा.
राइट जोटा कि तुम बिजनेस करियर हेल्प करनोथला फेमा कौन कला ताको टिके लिबरल कर देला राइट तो नाउ इन सर्टेन सेक्टर्स लाइक फॉर योर current account for trade and all we have 100% convertibility but trade account there is no restriction at all मुझे ट्रेड करूची मु जेते टका भी माने आसेकरी इंडिया रे डॉलर देखि पैसा डॉलर देकरी रुपीस नहीं परिबी रुपीस देखि डॉलर नहीं परिबी 100% convertibility is allowed in trade right but capital account रे जो investment रे still there is some restriction right so that foreign exchange reforms भी आसीगला कि तमरो easily convertibility आसीगला trade and investment reforms then again yes our import export वगैरह भी ଟିକେ ताकडी liberal कले right to promote our trade and all then there was this even our letter of exchange and all our आसियाला letter of undertaking वगैरह जोटा तमरो trade रे यूज हुए right तमरो बैंक लिखि दबो कि मोर अमुक सेंट्रल जो अलगा स्टेट रो बैंक को इंस्टेड ऑफ माने कोन हुए ना वर्तमान डॉलर दरकार सपोज मु आसिक कहीं मार्केट रे एक्सचेंज रेट रे पसी डॉलर नेबी केतनो एक्स्ट्रा दवा पड़ियो कोन करिवो व्हाट आई विल डू ना आमर बैंक ना सी आउटे ताकर जो फॉरेन ब्रांच अछि ताकू लिखि देबे कि अमुक ट्रेडर को तमे इति टका दियो राइट सो गिव हिम एंड सी सेटे किना किनी कर परिबो राइट तो धर मु यूके रे किना किनी कली मते पंजाब नेशनल बैंक लिखि दे देला लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लिखि गिरी लेटर ऑफ क्रेडिट एलओसी एलओयू जहां भी कोन दे देला कि आकू तमे एतिकी ताकू 1 लाख डॉलर दियो से किना किनी करिवो तो 1 लाख डॉलर रे आई विल डू व्हाटएवर बिजनेस देयर राइट मु आसी बतन इंडिया वाला बैंक को पैसा दे देबी रुपीस रे राइट तो मोर आउ से टेंशन रहइबनी कि मु एटू एक्सचेंज करके नेबी एंड ऑल दैट टेंशन नॉट बी देयर सो ए वे डिफरेंट डिफरेंट तमरा रिफॉर्म्स आले टू मेक द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इजी right so this is your liberalization okay so you can see तमरो किमिति सेक्टर्स को ओपन अप कले प्राइवेट प्लेयर्स को ओपन अप कले किमि तमरो जो बैंकिंग वगैरह ताकू लिबरलाइज कले बैंकिंग इंश्योरेंस एडा सब टैक्स रिफॉर्म्स किमिति आनले सब डिफरेंट इजी टैक्स रिफॉर्म्स देन तमरो जो फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्टिबिलिटी हे गला ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स किमिति आनले सो ऑल दीस वर लाइक योर लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स जोटा कि तमरो प्राइवेट सेक्टर को और स्ट्रेंथन कला राइट एंड तमरो जो ग्लोबलाइज कला हमरो जो ट्रेड वगैरह सब कुछ ओपन अप कला right so this is your liberalization reforms any doubt in this any doubt in this No, sir. okay second then privatization नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन थिला गोटे प्रॉब्लम तो चलो तमे बर्तन प्राइवेट प्लेयर को तमे टिके एंट्री दे देलो राइट बर्तन पूर्व प्राइवेट प्लेयर मानकर रोल बहुत लिमिटेड थिला तांको इजी लाइसेंस मिल नथला इंडस्ट्रियल लाइसेंस तो तांको पे तमे ओपन अप कर देलो इकोनॉमी दैट इज गुड the next problem is that the existing PSUs were sick they were loss making बहुत unnecessary expenditure कर रखिथिले high salaries तांको मैनेजमेंट पाउथिले and they were making losses right तो तांको रिवाइव करियर थिला तो तांको रिवाइव करको आसला प्राइवेटाइजेशन व्हाट हैपेंड डिसइन्वेस्टमेंट आरंभ कले राइट तो डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन डिफरेंस कोन डिसइन्वेस्टमेंट माने तमरो can anyone tell me disinvestment and privatization difference kono what is do you mean by privatization and disinvestment difference kono anybody tell me what is the difference between disinvestment and privatization सर डिसइन्वेस्टमेंट रे जोटे गवर्नमेंट तार माने 50% रो कम माने शेयर अधिक थिबो से वर्ष शेयर को सेल करिवो प्राइवेट बॉडी को माने गवर्नमेंट रे शेयर केते रहबो फाइनली 50% थिबो किंतु सेटा से 50% रो अधिक कम जे से माने बिक्की देबो प्राइवेट मेंबर को तल सेटा डिसइन्वेस्टमेंट हबो गवर्नमेंट रो माने फाइनली किछि पोर्शन तार बिक्की दबो फाइनली गवर्नमेंट विल बी द ओनर राइट 51% गवर्नमेंट रहबो गवर्नमेंट विल बी द ओनर दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट करेक्ट माने तमरा किछि पार्ट तमे तार तमे सेल कलो राइट
like completely sell no. So disinvestment is like तमर किछि part तमे तार invest करिवो, right? Privatization is तमर बर्तमान private रो share बढ़ी गला, तमे less than 51% तमर हे गला, that is privatization. If the government shareholding is less than 51%, that is privatization, right? And disinvestment is तमर किछि part तमर ये करिवो जेमि कि still government are holding 51% रहइबो, right? So एटा दरकार थिला because the sectors were sick, तांको रिवाइव करिया पई now this was required कि तांको भीतर किछि प्राइवेट तमे जो इक्विटी पुरेवा दरकार थिला, so that happened. The and the strategy was by disinvestment and privatization, right? ते देखि दबा एटा सहज टॉपिक किछि बेसी ना डिटेल नै. तो it implies shedding the ownership, right? Ownership को तमरा like कमे दबा ownership रो कोटा टागु. So shedding the ownership of the government of a government-owned enterprise by a private enterprise, right? By private company. Private company को तमे दे दबो किछि. The various features of privatization are as follows. The government companies are converted into private companies in two ways: by withdrawal of the government from ownership and management, by outright sale of the public sector companies. Privatization of the enterprise by selling part of the equity is known as disinvestment, right? This was I was telling. Part of the equity that तुम दे दो, it is disinvestment. And যদি পুরা তুমি দেই দেলা, then it is privatization, but not পুরা, 51% to the তোমার share কমিলা, it is privatization, right? The government has also made attempts to improve the efficiency of the PSUs by giving them autonomy in making managerial decisions. For instance, তোমার जो नवरत्न महारत्न सब आसीतला एंड ऑल, तांको भी काफी ऑटोनॉमी दे देला कि सेमान डिसाइड कर परिबे केते कोन सेमाने इन्वेस्टमेंट लोन उठेबे, केते पैसा सेमाने लोन आनिबे, केते कोन इन्वेस्टमेंट करबे. All those decisions were given to them, right? According to the level of autonomy, they were divided according to the size of their company size, and तांको केते केते सेमाने ऑटोनॉमी दाउ दिया हला कि तमे एतिकी तक तमे पैसा उठे परियो मार्केट रु, तमे एतिकी एतिकी तमे इन्वेस्ट कर परियो. So those things accordingly they were termed as Maharatna, Navratna, right? Mini Ratna, so they were termed like that. So privatization जदि हम कहबा कोन objectives to reduce the financial burden on the government. Yes, तो गवर्नमेंट टू जो तार शेयर कमे देला, प्राइवेट कंपनी दे देला, राइट? तो फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट को कमे गला, गवर्नमेंट बारंबार लोन वोन ऐसे दरकार नहीं. टू इम्प्रूव द पब्लिक फाइनेंस, यस, तो गवर्नमेंट रो तमरा टैक्स मनी ही तरे फसु देला, तो पब्लिक फाइनेंस भी तमरा इम्प्रूव होला. टू इंट्रोड्यूस कंपटीशन एंड मार्केट डिसिप्लिन, राइट? यस, ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर आसला पर धीरे यार कंपटीशन टा बढ़िबो, मोनोपोली छाडी के कंपटीशन बढ़िबो तमरा. To depolitize the essential non-essential services, right? Even political control taru kame dele, to encourage wider share of ownership, right? So काफी बेसी private वाला को भी encourage करे थे possibly the efficiency बढ़ेबे. These were like high level तमरा privatization रा तारा intention. गवर्नमेंट लॉस मेकिंग जो पीएसयू थिला तांको केमिति सुधारियार थिला, तांको सुधारिया को कोन करिवे, प्राइवेट प्लेयर को एंट्री तांको निजर जो 100% शेयर रु प्राइवेट वाला को बिकी देले, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी केते लॉस मेकिंग अछि, कोरा पूरा बिकी देले, 100% प्राइवेटाइज कर देले पूरा, किछि किछि पार्ट कर देले डिसइन्वेस्टमेंट, किछि किछि रे 51% टू अधिक तांकर स्टेक बिकी देले, दैट बी प्राइवेटाइजेशन. 51% अधिक जदि प्राइवेट कंपनी नै गला, सी गोटे प्राइवेट एंटरप्राइज हे जिवो, आ पीएसयू रहइबोनी, राइट? Those are the government rahibo stakes, still it will be a private company, right? So this was the things done to increase popular competition, to get rid of these loss making industries. तांको भितरे नुआ मैनेजमेंट आसीबे, नुआ तांकर like तांकर मैनेजमेंट आसले तांकर probably profit orientation तांकर आसी जिवो, right? This is the your privatization, right? Okay, privatization disinvestment कहउतले 51% to अधिक कर देले, this privatization ताडू कम हेले, it is disinvestment. Then globalization. What is globalization? Liberalization तो हेगला, liberalization ला तमरा प्राइवेट वाला को तमे डिफरेंट सेक्टर देला, तमरा प्राइवेटाइजेशन को हला जो लॉस मेकिंग पीएसयूज को तमे डिसइन्वेस्ट कर देला, that is privatization. Liberalization, privatization. What is globalization? The integration of Indian economy with the world economy. Correct, right? So basically now हमें
जो तमरो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हे गला ट्रेड हे गला तमरो इकोन जो तमरो इन्वेस्टमेंट आसुची एफडीआई एंड एफआई ताको ओपन अप कर देला देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन नाउ राइट वी सॉ दैट ऑटोमेटिक रूट तमरो ऑटोमेटिक रूट एफडीआई अछि 100% बहुत सारा सेक्टर्स रे 100% एफडीआई अलाउड अछि देयर इज नो अप्रूवल एंड ऑल रिक्वायर्ड राइट सो दिस इज हाउ तमे इन्वेस्टमेंट तमे हे गला तमरो रेमिटेंसेस आसिला बढ़ला तमरो इन्वेस्टमेंट हला तमरो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हला राइट सो दिस इज हाउ I'm like तमरो तम इकोनॉमी को ओपन अप कर देला बेसिकली नाउ इट इज ओपन हे गला इंडस्ट्री टू एनी लाइक इन्वेस्टमेंट एफडीआई एफआई कमिंग राइट एफडीआई एफआई आसला नुआ एमएनसीज आसला चाकरी मिलला ग्रो इकोनॉमिक ग्रोथ हला राइट सो तमरो जादरा इकोनॉमिक ग्रोथ हला प्लस इंडियन कंपनीज भी टीसीएस वगैरह फॉरेन गले तांकर एमएनसीज वगैरह सेठे तांकर निजर कंपनी खोलले फॉरेन ऑफशोर रे तांकर डेवलपमेंट सेंटर खोलले सो दिस इज हाउ हमारा जो सर्विसेज सेक्टर बूम हला बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन इनिशिएटिव राइट बिकॉज ऑफ दैट हमारा सर्विस सेक्टर बूम हला आफ्टर 1991 राइट सो दिस इज योर ग्लोबलाइजेशन डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखो टिके डिसएडवांटेज अछि करेक्ट जो ओपन अप करूचु ए मझिरे हमरो रिस्क आस्थिला कि हमरो व्हाट वाज दैट एशियन रो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थिला तो इंडिया साइन करिया पे गोटे चलथिला गोटे डिस्कशन देयर वाज ए प्रॉब्लम की विथ दैट तमरो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड रे काफी तमरो चीप डेयरी प्रोडक्ट्स अछि तो दे विल बी डम्प्ड राइट से माने आसले बिकॉज दे हैव गुड लॉजिस्टिक्स वेरी गुड लॉजिस्टिक्स तांकर का जो कॉस्ट ऑफ टू मार्केट इज लेस राइट दे हैव वेरी गुड मैकेनाइज्ड वगैरह सिस्टम अछि देयर कॉस्ट टू मार्केट इज वेरी लेस तो हमर जो इंडिया डंप कर ना अमूल बर्बाद हे जो अमूल कंपीट कर परिबनी राइट एते तांगर सस्ता से डंप करिवे एंड सो मच वेराइटीज प्रोबब्ली अमूल लॉस हबो तो यस तो ए सो फॉरेन ओपन अप हे गल ना तो देयर इज अ प्रॉब्लम विथ योर इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑल राइट तो दे फेस स्टिफ कंपटीशन राइट दो कंज्यूमर पे भलो प्राइस तमरो डेमोक्रेटाइज हे जिवो दैट इज गुड बट this Indian जो अच्छी इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ऑल तो दे विल फेस स्टिफ कंपटीशन एंड दे माइट पेरिश राइट तो यही रिस्क तो रही ग्लोबलाइजेशन बट देन आमे ताकू गवर्नमेंट कौन करिया पड़िबो से इंडियन जो हमर वाला को भी तमे किछि किछि सब्सिडी दियो ताका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो लॉजिस्टिक्स डेवलप करो तो यू ब्रिंग देम एट पार राइट तो जिमिति कि आमे जाकी तांकर कंट्री रे आमे जाकी एक्सपोर्ट करिवा राइट उल्टा हबो सिचुएशन सो यू तमे चाइना जिमिति तार करिछि तमे लॉजिस्टिक्स को एते बढ़िया कर दियो हमर जो कम्युनिकेशन लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट वगैरह को एते बढ़िया कर दियो कि हमर एते सस्ता हबो कि से माने हम मार्केट को आसले तांकर जिंस बिक्री होबनी राइट चाइना जो दिवाली बल्ब बिक्री होची सस्ता रे बिकुचंती हमर इंडिया रे एक्सपेंसिव ने हमर सेति की सस्ता आसी गला वी हैव सो मच गुड लॉजिस्टिक्स सो मच गुड टेक्नोलॉजी जो हमर आसी गला तो चाइना रे माल बिक्री होबनी उल्टा हम जाई चाइना रे बिक्री करिया ठीक है हम जाई यूएस रे बिक्री करिवा सो दैट थिंग हैज टू हैपन राइट आर ए डिसएडवांटेज तो अच्छी कि फॉरेन कंपटीशन आसी गला हमर इंडियन जो इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स माने दे विल बी फेसिंग डिसएडवांटेज पॉजिटिव आउटकम्स देखिबा एलपीजी रिफॉर्म्स रो I was telling you कि each sector like the GDP growth I was telling you कि देखो 1991 it was only 1.1% तमरो GDP growth थिला right and we see तमरो GDP growth around 8% 2017 थिला yes तापर तमरो जो demonetization पर के impact हेतिला and then हमारा कोविड पर के impact हेतिला demonetization वगैरह जीएसटी पर impact हेतिला then कोविड आसीगला so because of that the our GDP कम अछि otherwise we are clocking near 8%. 8% GDP growth is really high, right? So that was the achievement from 1981. So till 20 years like almost like we reached 8% GDP growth, right? That was something commendable. And then tomorrow सर्विस सेक्टर देखो each sector हम sector wise देखिबा एग्रीकल्चर सेक्टर देखो like it was माने काफी बेसी हमें ग्रोथ करछे एग्रीकल्चर सेक्टर रे दो अगेन द प्रॉब्लम्स आर स्टिल देयर वी हैव प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर इनकम एंड ऑल दोस प्रॉब्लम्स आर देयर प्रोडक्टिविटी नहीं तो दोस आर देयर बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडस्ट्रीज देखो इंडस्ट्रीज आल्सो दो नॉट बहुत डिसेंट है नहीं बट स्टिल लाइक इंडस्ट्रीज भी हमारा काफी ग्रोथ है छी राइट
and but the most basic favorable growth is service sector रे brilliant growth, right? Service sector we are the number one. So our economy major contributor is your service sector, right? You're almost 55% I think GDP ର ତମର contribution service sector ର, right? So big contribution part our service sector ରେ ହେଇଛି. This was not the case, right? Service sector ରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଆମର growth ହେଇଛି. I don't have the figures now, like mains ରେ ତମକୁ figures ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ. I don't have the figures with me right now, but ଆମେ ଯେତେବେଳେ mains answer writing discussion କରିବା I'll give you the figures, right? So ଓଡ଼ିଶାର and Indiaର what are the figures ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା before LPG and now what are the figures ଆମେ discuss କରିବା. ଏଇଠି prelims possibility ଦରକାର ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି? Just we need to know କି କଣ growth ହେଇଛି. GDP ହଁ GDP ବହୁତ ବଢିଛି ଆମର ସେଇ ଟାଇମ ରୁ. ଆମର ट्रेड बास्केट बहुत बढ़ी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी बढ़ी हमर डिफरेंट कंट्रीज. हमर बहुत सारा एफडीआई बढ़ी, रेमिटेंसेस बढ़ी, फॉरेक्स बढ़ी, राइट? ऑल दिस आर योर रीजन. एलपीजी रिफॉर्म्स रीजन इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी, राइट? our service sector, like we are the number one because of this, right? So these are the different your positive outcomes. Negative outcomes, देखो, I was telling you industrialized हमारा जो एलपीजी जोगु somewhere हमारा जो फार्मर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर इतने हमारा ये है ही पारनी, राइट? ग्रोथ है ही पारनी. सर्विस सेक्टर बहुत बढ़ गया, एग्रीकल्चर है गला, इंडस्ट्री है गला, एगुड़ा को हमारा ग्रोथ है ही पारनी है, राइट? सो दिस इज लाइक वन थिंग. एंड आउट ना हमारा आर गुड मेजर प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गया, बहुत बेसी इनइक्वालिटी बढ़ गला. बिकॉज हमको किछि किछि सेक्टर वाइज बहुत बेसी डेवलप हो गला, सेक्टर वाइज रीजन वाइज बहुत बेसी डेवलप हो गला आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स, राइट? एंड द पोरर स्टेट्स एंड ऑल दे went down. तो inequality के rise हो गला, right? So high level एतिक हम देखिथिबा answer writing, and while mains answer writing we see कि more focus on how to write this answer, कौन कौन points होएबो negative impacts रो, right? For now objective पे this is enough. Just remember कि हमारा एक concept है कि हाँ our service sector टा बहुत basic growth है इतला. There was not that much growth in agriculture and your industrialization sector रे, industry और agriculture ते growth नथिला. तो सर्विस सेक्टर बहुत बेसिक ग्रोथ थिला. एंड इनइक्वालिटी बढ़ी गला, रीजन वाइज हो, सेक्टर वाइज हो, इनइक्वालिटी बढ़ी गला. एंड ग्लोबलाइजेशन जो इवन हमर इंडियन जो इंडस्ट्रीज माने इंपैक्ट हेले, लाइक बिकॉज ऑफ द चीप डंपिंग बाय द लाइक other countries, right? So these are like some of your problems of your LPG, right? Negative outcomes we can say, right? So this is about your LPG reforms. Tell me any doubt. Any doubt? No? Okay. So किसी चीज देखियो हमें मॉनेटरी पॉलिसी देखियो. Okay. So ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ନା କ୍ଲାସ୍ ନା କଣ କରିବା? We'll continue or we'll end the class? Next class କରିବା. We'll continue or next class କରିବା? Continuous କରନ୍ତୁ sir. ଏତିକି ଥାଉ କିଏ ଗୋଟେ କହିଲେଣି. ଏଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଚାପ୍ଟରଟା ମନିଟରୀ ପଲିସି, ବଟ୍ ଫ୍ରେଶ ମାଇଣ୍ଡରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ. ମାନେ ତମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଲର୍ଟନେସ୍ ଦରକାର, ମାନେ କାହିଁ କନସେପ୍ଚୁଆଲ ଚାପ୍ଟରଟା ପୁରା. ସୋ ଟର୍ମସ୍ ରହିବ ଆଣ୍ଡ 5 minute gap. So next time କରିବା. ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କରିବା. Yes sir. ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଆମେ କରିବା. ओके ठीक है, चलो हम क्लास एंड कर दो. सो नेक्स्ट क्लास रे विल डू मॉनेटरी पॉलिसी. ओके चलो.